So hello, welcome back, guys. Welcome back to our YouTube channel SYH Capital. Here your host शिवम and आज हम सीखेंगे कि किसी भी एक चार्ट में कैसे हम तीन इजी स्टेप्स में एक टेक्निकल चार्ट को रीड कर सकते हैं. विद बेसिक सीरीज एक फंडामेंटल सीरीज होने वाली है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे, जिसमें हम एक बिगिनर को सिखाएंगे एंड विल हेल्प देम टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई a good potential stock, which stock to enter. क्योंकि 5,000 स्टॉक्स का ओवरऑल मार्केट है, जिसमें से मोर देन 1,000 स्टॉक्स आर लिक्विड, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो इंक्लूडिंग कैश एंड एफ एन ओ. तो आप कैसे स्टॉक सिलेक्शन करो. जैसे जैसे आपका स्टॉक सिलेक्शन बेटर होगा, वैसे वैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी विल इंक्रीज. ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये ऐसे बेसिक्स से बहुत सारे वीडियोस लाएंगे. तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डू द कमेंट. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. As you can see in my screen, there is a presentation we have made of one pager, a three-step process to read a chart technically. Okay. तो सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बोला हुआ है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड. व्हाट इज द मेजर ट्रेंड ऑफ अ economy? What is the major trend of a country, of inflation, of anything, for foreign exchange rate, anything? If you know the trend, then you will get the basic understanding of how to deal with that trend. So if the trend is up, you are bullishly biased. If trend is down, you are bearishly biased, and you will look for trade which you have a potential to make a short or have a short position on it. आपको एक ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अभी हम ये जानेंगे हम ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, और हम कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन ट्रेंड्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं. और जहां पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन द ट्रेंड्स, हम कैसे उस चीज को मतलब साइड रख सकते हैं, एंड देन वी कैन फोकस ऑन द थिंग्स विच आर इन सिंक्रोनाइज विद द ऑल द ट्रेंड्स. हम ट्रेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में. उसके बाद हम मार्केट की लेवल्स की बात करेंगे. दिस इज द सेकंड स्टेज where you need to know. So once you decide the trend of a stock or a sector or anything, then you understand the key levels कि buyers कहाँ पे बैठे हैं, sellers कहाँ पे बैठे हैं, demand zone कहाँ पे बन रहा है, what is the FVG area, where is the highest volume profile, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, किस तरह से लेवल्स बन रहे हैं, क्या जोन है बाइंग सेलिंग के, हम मार्केट की लेवल्स में वो देखेंगे. देन वी विल टेक द कंफर्मेशन बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड व्हिच कैन बी ईदर शॉर्ट और ईदर लॉन्ग. हम एंटर करेंगे, हम बेसिकली कंफर्मेशन लेंगे इंडिकेटर्स से. दैट कैन बी RSI, MACD, क्रॉसओवर्स, वॉल्यूम्स एज वेल, एंड दैट मतलब इट कैन बी एनीथिंग बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस एंड योर understanding, but a basic altogether combined, we can able to filter out a few stocks out of this basket of 5,000 or 1,000 stocks. We are able to select at least 15-20 stocks, out of which we can take positions in 5 to 10 stocks, and then we can make the profit, and it will ease out our filtration and trading journey. So let's come to the charts. Coming to any, what you say, any stock, for say, uh, for example, Reliance Industries. Coming to Reliance Industries, if we see, the stock on monthly time frame is making higher highs and higher lows. So stock is making higher high and then a higher low, higher high and a higher low, higher high, higher high, higher low, higher high, higher low. So as per the Dow theory, higher high, higher lows are basically a sign and significator of an uptrend. So this tells us that the stock name Reliance is an uptrend. So from here to around 16 to, it's just making higher and higher low, and no single low of previous lows has been broken on the monthly chart. Coming to the weekly chart, so here's the picture is different. It's the same stock, but अभी यहाँ पे स्टोरी अलग है. स्टोरी अलग कैसे है?
कि वीकली लेवल पे देयर आर लॉट ऑफ विपसॉस, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देन इट्स अ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक काफी करेक्ट हो गया, देन अगेन इट पुशेस बैक अप, अगेन सेम रेजिस्टेंस एरिया पे आया, देन स्टॉक अगेन केम डाउन। तो यहाँ पे काफी ज्यादा विपसॉस है। अगर आप देखोगे, दिस वाज अ ब्रेकआउट एरिया and then stock went up and then again broke another level here and then again came down. Same thing was happening here. It went all the way up here, face resistance, came down. So how we can tackle it through seeing the lower time frame. So on a monthly time frame, the stock is bullish. On a weekly time frame, it is sideways. Right now, it is at a resistance area. So coming to the next point, where is the demand zone? So this was a earlier demand. This was a earlier. It was a as earlier it was a resistance area and now it is a demand zone. You can see a hammer is being made here. So from here there is a high chance there are a lot of buying orders are being placed. The people who have tried to enter in this rally have a lot of pending orders here, and a lot of people also have a stop loss here who have entered here. तो उन सबका stop loss and pending orders already इस वाले फॉल में it has been covered, but still there is a lot of chance कि यहाँ पे अभी भी still pending है, there is a lot of demand है. सो ये हमारा एक डिमांड सप्लाई जोन हो गया. तो कमिंग दिस इज द सेकंड पॉइंट. तो हमने सेकंड पॉइंट भी एनालाइज कर लिया कि दिस इज द डिमांड जोन एंड वी कैन सी क्लियरली आपसे एक अच्छी खासी सेलिंग है 1600 से 1500 के लेवल्स पे, और हमारी एक बाइंग है 1300 से 1200 के लेवल्स पे. सो बेसिक स्विंग ट्रेडर क्या कहता है कि आप 1300 से 1200 की रेंज में बाय करें एंड देन एक दो वीक में यू कैन सेल इट एट 1600 एंड सिंपली मेक इजी मनी विथ बेस्ड ऑन सिंपल अंडरस्टैंडिंग. सो ये हो गया हमारा फॉर्मेट 2. कमिंग टू वन मोर लोअर टाइम फ्रेम कि अभी वीकली पे इट्स गिविंग विपसॉस, डेली पे क्या इश्यूज आ रहे हैं. तो डेली पे भी सेम इश्यूज हैं. यू कैन सी द रिलायंस. अब डेली में फिल्ट्रेशन के लिए देयर इज लॉट ऑफ नॉइजेस. जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम कम करते जाते हैं नॉइजेस बढ़ती जाती है. तो देयर आर लॉट ऑफ फेक सिग्नल्स अवेलेबल. तो अगर आप देखोगे, so here there was a at a demand zone there was a 200-day moving average and stock was taking support at 200-day moving average. Then it given a bullish crossover, broken the resistance, move all the way up from here. So from 1432 to 1580, it went up in a moving average, taking support of moving average, and then here it given the crossover, and then the stock plummeted and went below the 200-day moving average. So what we can see on weekly it was whipsawing, but on daily it has given a clear cut buy signal. Same here, it has given a clear cut sell signal from a supply area. The what happened, moving average has given a sell signal. There was a lot of volumes in the selling, or you can say fall, and once that has happened, uh, you can see a lot of volumes here at this area during this fall. So lot of participation was there in this fall. So people have must have shorted this, and then it came all the way here, and then coming back to the basics. Again, what happened here? It was below 200-day moving average, so it was not an sell or entry point, but this was a demand zone. So what happened once the prices crossed the moving average and the demand zone? There was a short entry at 1330 rupees, and if you have made just by trailing the moving average, you could have got around 300 to 150 100 to 150 points easy money out of just simple setup of this. So what we have to keep in mind, first we have to take the time frame, like in all the time frame like monthly, weekly and daily, all are bullish or all are in short. So this can be any direction. So आपको ये decide करना. Once that is done, you need to point out what are the key demand and supply levels you market कि वीकली और डेली पे क्या डिमांड सप्लाई लेवल्स है. दैट विल
eventually act as a support and resistance in daily time frame or 15 minutes time frame. Then you go back to the daily chart. You check the volume, you check the RSI, you check the moving averages, back it with the indicators कि जहाँ पे तुमने डिमांड जोन ड्रॉ करा है वहां पे बाइंग है कि नहीं है. So once you do all that, you make a full-fledged system which will help you out to be a more profitable trader and be more accurate in your decisions. So that's all for this video, and we'll see you in the next video. Thank you, and have a nice